हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड फॉर प्लेसमेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू लिमिट द आउटपुट। ठीक है, सो लेट्स से इफ आई एम यूजिंग दिस स्टार थिंग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। सो कस्टमर टेबल, इंटायर टेबल जो होगा हमारे आउटपुट में आ गया है, राइट। सो हमारे आउटपुट को कैसे हम लोग कन्फाइन कर पाएँ, कैसे आई कैन पुट इट टिल लिमिट। सो दैट्स हाउ द लिमिट क्लॉज कम इनटू द पिक्चर। आई कैन लिमिट द आउटपुट, correct. So if you want the 10 customer, you can put it limit 3. If you want 10, if you want 3 customer, you can put limit 3. If you want x customer, you can put limit x, right? So that will show you till the x column alone. If you put limit 300, it will show you only 300 records from select star from customer. ठीक है, सो ये हमारा लिमिट का फंडामेंटल यूज है. सो लेट्स से if we don't want the 300 entire table, so we can execute the column and we can put it like all 10 customers, करेक्ट. सो हम लोग सिर्फ 10 कस्टमर्स ही चाहिए, हमको कंप्लीट टेबल नहीं चाहिए. इफ आई वांट टू सी समथिंग और इफ आई वांट टू एनालाइज एनीथिंग फ्रॉम द डेटा टेबल, सो आई कैन यूज इट लिमिट keyword, that is select star from customer limit 10. So if I'm going to write limit 10 means it will give me the top 10 result. So let's understand. So if I'm having like page 1 1 to 3, page 2 4 to 6, or page 3 7 to 9, right? So basically if I'm having page 6 3 7 to 9, so first two pages need to be skipped, correct? So first 6 record needs to be removed, right? So I can put the limit 6 to 9 3. So if I'm putting limit skipping the first 6 record, then pick 3 record from the clause. Okay, so limit 6 and 3 will be picked up. So you can see first 6 records are not there. You can have 3 records you are already having after 6, करेक्ट. होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. पहले 6 रिकॉर्ड्स को हम लोगों ने स्किप करके आखिरी के 3 रिकॉर्ड्स को यूज किया है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज हेयर. सेलेक्ट स्टार टू गेट द क्वेरी ऑन टॉप 3 रॉयल कस्टमर्स. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाई पॉइंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट. सो ये हमारा जो पॉइंट डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स हाइएस्ट पॉइंट विल बी कमिंग ऑन द टॉप. Now if I'm putting limit on this particular query, limit 3, so my first 3 record will be printed, correct. So let's put that as well. So if I'm going to put this, select star from customer, order by point descending, and limit 3. So if I'm putting limit 3 means first top 3 customers are getting printed who's having the point to the maximum, correct. This is the best way to solve or to implement the limit question. Thank you so much guys. Do subscribe to Code for Placement and we will be coming soon with more such videos for you. Thank you so much. Thank you to stay with us.